Bismillahirrahmanirrahim. This is day 11 of our KAPS calculations, and today we will be discussing chapter 11 of Monash University lecture files. This chapter is regarding the buffer solutions. And what kind of questions we can encounter is, first of all, what is the final pH of solutions? These are the keywords that you should be searching in questions. What is the final pH of solution? Salt means acid ratio salt or base ratio salt, and dissociated ratio undissociated, then the buffer capacity, maximum buffer capacity. These are the words. These will be in the questions. If you encounter one of this question in your KAPS exam, you should know this is coming from chapter 11. Now, very simply, we are going to memorize the formulas related to this chapter, and I want you all to grab your registers and write down with me. As I told you, how is this formula working? You should write it down. मैं 1 मिनट देता हूँ, आप जल्दी से ना अपने सारे रजिस्टर अपने पास लें, ये मेरे साथ आप लिखें। हुआ ये था कि कल का भी जो लेक्चर था ना, सेशन था, वो मैं भी थका हुआ था, फिर मैं ज़्यादा कर नहीं सका उसको प्रिपेयर, तो वरना मैं उसको भी आप लोगों को साथ साथ लिखवाता। इससे अलर्टनेस भी बढ़ेगी और कुछ छोटी चीज़ें जो हम मिस कर जाते हैं बाजू का, वो भी आप लोग ग्रैब कर लेंगे। रजिस्टर अब सभी के पास है? जी सर। जी सर, जी सर। अच्छा जी, बाकी लोग भी नहीं है तो वो आप रजिस्टर पे मेरे साथ लिखें, बेटर रहेगा। अच्छा, इसमें भी जिस तरह कल था, जस्ट लाइक यस्टरडे, there are only 2 to 3 kind of formulas and rest are their manipulations. We will start from here. Write down this pH. This formula is about two things. Either they will ask us about the final pH of the solution, or maybe they will ask us about the salt to acid ratio. So this is Henderson-Hasselbalch equation. You will read it in your bioform studies too. I have made it simplified. So write it down. This first one, pH is equal to, pH will be given or we have to find it. Next, pKa. pKa value will be given. Then this plus sign, be careful of this plus. Maybe sometime you will confuse it with cross, mean multiplication, but this is a plus. Log, this is going to be as it is. And then the salt and in the denominator acid. Now the value of this salt and acid. Okay, let me tell you what is this salt and acid. There will, in these type of questions, there will always be two things given. Take a look. This CH3COOH is acetic acid. This is acid, and the other thing is salt of this acid, that is CH3COONA. This is salt and this is acid. Just like this. You do not need to know chemistry a lot for this, because they will give you some clue about what is if this is acid, base, and what is salt. Just keep in mind, if they give you the formulas, this thing added at the end of the formula, sodium or maybe any other atom, this is salt form and this is full form acid or base. Is this clear? The difference between Yes, salt sir. and acid? Perfect. Now write this down. Salt divided by acid. Now the unit of this salt and acid is going to be in molar, M capital, molar. Just like I told you in our last or maybe second last session, this M large in capital means moles per liter. So combined, we call it molar solution. This is the concentration. We will be using this molar throughout this chapter. Now, another thing is the second formula. You can see this is for base. This is for the upper formula was for acid and the lower one is for base. In this formula, we have flipped it upside down. In the acid formula, acid will remain down here, and in the base formula, base will come up here and salt will go down. Write this down as well on your register. For acids,
Acid is coming down. For base, base is coming up. Find your own way to memorize it. It is easy to confuse it during the exam, but if you can memorize just one, that, for example, just memorize the acid. If it is acid, it's coming down, and salt form is coming up. Now these two are clear. Yes. जी सर, जी सर। अच्छा, किसी को भी कोई सवाल हो ना तो हेजिटेट नहीं करना, आपने पूछ लेना मेरे से, क्योंकि ग्रुप के अंदर मैं फिर अवेलेबल नहीं होता डे टाइम में भी, और उनमें भी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि ये हर किसी का ना क्वेश्चन सॉल्व करने का डिफरेंट स्टाइल होता है। मेरा डिफरेंट है, शाहिद भाई का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इदरीस भाई का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अभी जो मेरे से कोई क्रिटिकल चीज मिस हो रही है वो आपने फिर पूछ लेनी मेरे से। अच्छा, इसी तरह अब हमने ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जो ये दो फार्मूलाज हैं ये डिफरेंट दिए हुए बुक के अंदर, बट वी विल डू इट हेयर बिकॉज दीज आर सिमिलर। If they are talking about salt and acid, then we will use this formula. But if they are talking about the ratio of dissociated versus undissociated drug, this is also a coming question type. So what we can do is to learn, this is just a translation. Just replace this part with this. And this is a translation of this form. First, acid. Acid means a full formula. This is going to be undissociated. And salt form of this acid is dissociated. Make sense? नहीं, दोबारा देखते हैं। This is acetic acid, CH3COOH. If this is given, we will take this as undissociated, means this is not dissociate. Dissociating means one molecule is going to dissociate into two. So this acid is going to be undissociated, means single formula. For the salt form, we take this as dissociated, means this can dissociate into two molecules. Now this makes sense? किसी को अभी भी नहीं पता चला, मुझे दोबारा बताएं, मैं दोबारा बता दूंगा। अच्छा, बाकी लोग समझ आ गई कि डिसोसिएटेड और जी सर। अनडिसोसिएटेड में क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, अब if they are giving us the asking about the dissociated undissociated form, just replace this part of the formula with this. And as I told you, salt is dissociated, and acid or base, whatever it is undissociated. So this is a mere translation of this formula: salt dissociated, acid undissociated, and here base is undissociated, salt is dissociated. In case of base, use this formula downwards, and in case of acid given, use this formula. Now a question should arise that how we will recognize this is an acid or base. So this is not a test of chemistry. They will give you some clue. We'll find out in the later questions. They will give clue that is this an acid or base. So we will use this corresponding formula. Then the third formula, not very important. Okay, one thing I missed this part. I have told you the concentration of this salt acid thing is going to be in molar. What if they give you concentration in percentage? Then we need to convert it into molar. And for molar, I have already told you that Number of moles per liter. All of these things is going to be in liter. This percentage means out of 100. So we need to convert it from 100 to 1000 ml to make it molar. We'll see a question type of this later in our session. But be careful of units. This is the only thing they can distract you with, and rest is going to be simple. Now this buffer capacity formula, this is not well described in our books. There is very less chance of this coming in your KAPS exam, but let's have it. Buffer capacity is equal to 2.303. This is the value you need to memorize, multiplied by concentration. Concentration will be given in the question in the form of units, molar. Again, we will be using molar throughout this chapter. Then again multiply, write this down with me. Again multiply Ka. Ka is constant, the value will be given in question. And then hydrogen ions. This is number of hydrogen ions.
Then down here, put these in a bracket, and this time there is a plus sign between these. This is plus sign, this is multiply sign, and put a square to it. Just memorize it this way. Can be confusing, but with practice you will memorize it. Then comes maximum buffer capacity. This is different. This is simple, different, and it has a greater chance of coming in your KAPS exam than this buffer capacity, related to this buffer capacity. The Bmax, simply they will write in the question max buffer capacity, maximum buffer capacity. And this will have a value of 2.303 divided by 4 multiplied by same concentration, just like here. And not the next part is not coming here. Are these formula you have written on your registers and you are feeling comfortable with these now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's dive into some practice. Good. One thing I want to tell you, in this chapter and in our next chapter, we will be using the function of log here. And I want you to understand it clearly. Okay, tell me how many of you have scientific calculators with you? I have. You will need scientific calculator. Do not use the calculator given on screen. It's terrible. And a simple calculator is not going to work. So bring a scientific calculator with you. Okay, good. 5 people have, 6 people have the scientific calculators. Let's arrange them. And I advise you to start practicing own scientific calculator directly from now on, so that your hand will get adjusted on the calculator. Now let's see. For the sake of this chapter, we are going to see how to calculate log and how to calculate anti-log. First one, the log. This is simple. You write on your calculator. I have taken this screenshot from my mobile because I lost my calculator, scientific one, but I had one when they gave the exam. Simply 4 point, how to solve this equation on calculator. You write this down. Okay, this is the equation, this is the answer. 4.76, 4.76, the plus sign, if any sign is here, you just put it here, then log, this bracket will automatically appear, and then whatever the value is, you can close it, or maybe you don't close it, just hit is equal to, and this will be your answer. So taking log is easy. This is kind of a button you will see on your calculator, log, simple. Is this clear? ये क्लियर है सबको कि लॉग कैसे लेते हैं? जी सर. Sir, can you repeat it? मेरा आंसर लॉग कुछ अगर और लेना है. है ना यार, ये पता है क्या, आप ये लिखें 4.76 प्लस लॉग, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो आप 1 लिखते हैं। हम इस इक्वेशन को मैंने देख रहे हैं, ब्रैकेट नहीं लगाई थी शायद इस वजह से. लॉग के साथ ब्रैकेट खुद ही लग जाती है। ओके. अच्छा, ये था सिंपल लॉग लेने का तरीका कि लॉग का बटन यहीं पे पड़ा होता है, सामने कहीं पे। हर कैलकुलेटर के थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है अरेंजमेंट में, लेकिन सामने ही होता है। इंपॉर्टेंट की है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी लॉग कैसे लेना। फॉर द सेक ऑफ एंटी लॉग, देयर इज the same button in most of the calculators, and the sign is this. You have to press the shift first, and then you have to press this log key. This will type this 10 to power x here. This is going to be the key on your calculator. This is blurry, but sometimes you need to press this shift in order to type this thing in yellow. Whatever it is yellow written on the upside of the button, you need to press shift first, and then you are able to hit this. Now you press the log. After pressing shift, this 10 to power multiply button will be used. But on the screen, sometimes you will see this mark instead of 10 to power x on the screen of your calculators. Those of you who have scientific calculators, try solving this. Write it down this way. Press anti-log, and then without anything else, because there is no plus or multiply sign here, just type anti-log and then 0.2, press is equal to. Is this clear how to take anti-log? Yes, sir. Okay, good, Bia, good.
किसी का कोई सवाल है यहाँ पे मुझे बताएं, मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि लॉग कैसे लेना है, एंटी लॉग कैसे लेना है। और ये बहुत आसान है, इसको भूल जाना। इसको आप लोगों ना कैप्स के पास एक सर दो बार मैंने फिर कर से मैं दिया, ये आपको। बता रही हूँ, इसे अच्छा सुनो। निकाल लिया। अच्छा, बाकी लोग भी अगर कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर लॉग और एंटी लॉग के अंदर, मुझे भी पूछ लें। नहीं, चले। अब ये चीज ना इजी है कि हम इसे भूल भी सकते हैं कैप्स एग्जाम के पास आके, तो यहाँ से अब आपने रिपीट भी कर लेना है इसी रिकॉर्डिंग में से। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन के अंदर भी इस तरह के कुछ फंक्शन आएंगे जिसमें हम इनवर्स ले रहे होंगे, वो मैं आपको फिर वहां पे बता दूंगा। तो ये बस दो चैप्टर्स के अंदर इस तरह की चीजें हैं, बाकियों के अंदर क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्पीडीली चलते हैं क्योंकि हमारा टाइम कितना रह गया। चले। अच्छा, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट फार्मूला की तरफ। ये हमने पहला फार्मूला किया था, pH is equal to pKa plus log salt by acid. Why acid? Because this is related to acid, CH3COOH. This is acid, I know, but they will be, I think they will type the word acid or base somewhere in the question. You have a bottle of 0.1 molar. The concentration is already in molar. Acetic acid solution pKa is given. Its pH is measured to be 2.88. This is initial pH. You will find two pH. First initial pH and then the final pH is what we are doing here. Now, what is the final pH? What is the final pH? So they are asking about finding this pH. If sufficient, this is salt form of acetic acid is added to make the solution 0.1 molar with respect to this salt. Start putting the values here. pKa value is given here. Put it, plus log is going to be the same. Now, this is the value of this acid, 0.1 molar acid. So put it here, acid. This is the value we put here. And then same is the value of the salt form, 0.1 molar. This is 0.1 molar of the salt form. Then this 0.1 divided by 0.1, type it on your calculator and you will get the answer 1. First solve this and then apply log. Then write, this is the equation I just showed you in our last screen. So when you type this on your calculator, you will get the answer. Simple, simple है ना? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इसको करने में? जी सर। सिंपल है सर। चलो आगे चलते हैं। अब अब क्या करने जा रहे हैं हम? अब हम देखेंगे कि जहाँ पे हमें कहेंगे कि ये सॉल्ट टू एसिड या सॉल्ट टू बेस रेशियो बताएं क्या है। इसके अंदर हमें पीएच गिवन होगी और अब हमें सॉल्ट और एसिड के रेशियो पता करने। ये भी उतना ही आसान है। ये है थोड़ा सा लंबा क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा करके लिखा है, लेकिन है ये सिंपल। Prepare an acetate buffer solution of pH 5. pH 5 is given. What is the molar ratio of salt to acid required? These are the words that are going to tell you that this question belongs to this chapter. pKa is given. Now only two values are given. First this pH and then this pKa. No other value is given. We are going to find out this ratio. How? We will take this 4.8 on this side. This is plus, and if we take it to left, it will become minus. 5 minus 4.8 is going to give us 2. Now on this part, this side of the equation, we have 0.2 and here log salt divided by acid. यहाँ तक क्लियर है कि क्या हुआ है? हमने ये सिर्फ पी के ए की वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड पे ले गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब हम यहाँ पे लॉग को खत्म करना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। When we take anti-log on right side, this anti-log and log, they will cancel each other and now there is nothing. But on this side, anti-log stays. Anti-log 0.2. On this side, now there are only salt and acid. Now, this is also the calculation that I showed you in second last screen. Anti-log of 0.2. Anti-log of 0.2 will give you this answer. And on this side, same, we have salt divided by acid. Now we move this acid from the denominator to up here. This means 1.58 of acid and
1 for salt. There is nothing, so there is 1. So the ratio will 1, ratio 1.58, and as acid is here, so this is the ratio of acid and this is the ratio of salt. 1.5 When there ratio is 1. nothing, that means there is one. Yes, there is 1. We are finding this out that if there is base, if this formula is for base, then salt is coming here in the end. Okay. Because we will be shifting this salt Yes, sir. down and base will come up, base divided by salt. So this is also very simple. We just found out the values left on the left side, and on the right side we just left this formula. Salt is salt divided by acid, or base divided by salt, and this way we find the ratio between these two. यहाँ तक भी क्लियर है सबको? कोई मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ एंटी Yes, लॉग sir, लेना आप clear लोगों है. को। आगे चलते हैं। अब यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ना they add some part in the question related to small conversion. For example, let's see the pH of 0.5% aqueous solution of isosigmine salicylate is 5.43. This is initial pH. How much is the pH increased by the addition of 0.1%? Okay, also take this in account. If they ask about how much pH increased, we can also find this out. We have initial, we are going to find final. We can also find the difference. This is the initial, and they are asking us to find out the initial and then find the difference. Another thing they have given here is these things in 0.5 and 0.1%, not in molar. So what we will do, we will first convert this percentage to molar. How? Very simple, we all know this. First take this physostigmine salicylate. See this word base. So now we know this formula is about base. First, let's translate this 0.5% into the molar. So how we will do it? 0.5 gram in 100 ml, x in 1000 ml, because molar is moles per liter, and liter is 1000 ml. So we have the value in 1000 ml, and now we need to find the moles. To apply the formula of moles, not millimoles, moles this time, because we are also in gram here. Number of moles is equal to mass by molecular weight. This is going to give us moles, and they are already in 1000 ml. So this is coming as molar. Same with physostigmine base. Is this clear? How we have turned percentage to molar? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Sir, ये yes, जो sir. मोल्स वाला है ना, ये वहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी, और वहीं पे होने चाहिए। ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। अभी तक हमने ये टॉपिक का कोई चीज सॉल्व नहीं की, हमने इसका पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, अब हमारे पास वैल्यूज है मोल्स की। अब आ जाए बेस का फार्मूला क्यों लगा, क्योंकि ये बेस दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर। पीके पीएच पीके ए प्लस लॉग, अब बेस ऊपर आएगी और सॉल्ट नीचे आएगा, एज पर द फार्मूला वी लर्नड। Apply the value 7.9. This where is the pKa given? How much? pH hiding something. Okay, this is the pKa given. This will be given. So this will be given. Apply the values here, 7.9 from pKa, and then the value of base. What is the base? This is base. So apply the value upside above here, and down the value of salt. This is salt, and this is base. Then simply this is a log type calculation, and you will get the answer. Now they are asking about how much the pH increases. So now we have the final pH coming from here, and we know the initial pH from the question, given in the question, and now we can find the difference. Final minus initial pH is, the difference is of 1.95 pH. So this much pH has increased. pH work like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So coming down is pH, increasing in acidity or basicity. Okay, maybe this concept doesn't make sense, but this is the difference, 1.95. ये clear है यहाँ तक सबको?
कि अगर हमसे वो पूछ लेते हैं कि पीएच इंक्रीज या डिक्रीज कितनी हुई है, आप इसका डिफरेंस निकाल के आंसर दे देंगे। यस सर, क्लियर है। चलिए, ये भी सिंपल था। सिर्फ और सिर्फ ये जो आधा पेज लिया हुआ है वो एक सिंपल कैलकुलेशन ने लिया, जो एडिशनल है इस क्वेश्चन में। एक्चुअल क्वेश्चन ये है। नाउ जो हम बात कर रहे थे एसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड की, सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम लोग करते आए हैं ये सॉल्ट बाय एसिड या बेस बाय सॉल्ट। Ibuprofen has a pKa of this is 4.4. If the pH of a patient urine is 7.5, what would be the ratio of dissociated to undissociated drugs? So, dissociated and undissociated drugs. This is the keyword. Now, working is they have given in the question that this is a weak acid. So, we will be using the equation for acids. And for acids, the acid come down or up or above. एसिड के अंदर एसिड ऊपर आता है कि नीचे आता है? डाउन 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 आता है। और एसिड जो होता है और जो सॉल्ट होता है, इसका मैं बता चुका हूँ कि एसिड जो होता है ये अनडिसोसिएटेड होता है, जो सॉल्ट होता है वो डिसोसिएटेड होता है। ये आप यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ उन्होंने, सॉल्ट इज डिसोसिएटेड एंड एसिड इज अनडिसोसिएटेड। अच्छा, सेम उसी तरीके से आप लोग इसको करते जाएंगे। अब हमने इसकी रेशियो फाइंड करनी है, डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड। फाइंड द रेशियो, टेक दिस pKa on this side, and after taking this anti-log will come here, and here the log will disappear. Do the math, do the calculation, and after all these anti-log calculation, this undissociated is going up, and this means the ratio is 1.25, 8.9 of undissociated to 1 to ratio 1 of dissociated. Is this also clear? Just like the previous question, now we talked about dissociated and undissociated. ये clear है सबको? यस सर, yes, क्लियर है। क्लियर है। इसे बता दें डिसोसिएटेड एंड का क्या बता रहे थे आप? डिसोसिएटेड Clear एंड है? अनडिसोसिएटेड। अच्छा ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं, टाइम भी खत्म होने वाला है। हाँ, क्लियर है, ये अब क्लियर है। एक आएगा क्वेश्चन जी जी, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। एक आएगा ओनली बफर कैपेसिटी क्वेश्चन, एक आएगा मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। अब हम मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का पढ़ने लगे हैं, दैट इज बी मैक्स। Very simple formula, 2.303 divided by 4 multiplied by this is the concentration given. What is the maximum buffer capacity of an acetate buffer with a total concentration of 0.04 molar? Simple, apply the value of concentration here in molar. If they have given you value in percentage, convert it to molar. And here comes our answer, very simple formula. And other thing, if they have given us two ingredients in a solution, you are going to combine both of these concentrations, and this will be your answer. Just add 0.20 molar and 0.10 molar. This will give you the total concentration in the solution is 0.3 molar, and then you put it in your max buffer capacity. This is very simple. This word will be there in your question, and this formula is going to apply 2.303 divided by 4. You should remember this value. ये clear है max buffer capacity का? यस सर, क्लियर है। अच्छा अच्छा, अब चलते हैं लास्ट। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने ये याद कर लेना बफर कैपेसिटी का। There is only one question in Monash University file and no question about this formula in APTEC file. And even in Monash University file, there is an ambiguity in this question. Let's see what it is. Calculate the buffer capacity. Now they are not talking about the max buffer capacity, they are talking about buffer capacity. The formula of buffer capacity is this. Of an aqueous solution of NaOH, strong base, having, it doesn't matter for a base or an acid because they have not clearly demonstrated it, having a OH of this concentration. There is a concentration given, there is this OH given, but in the formula they have only told us about this H plus. They have not given us anything what if there is OH in this book and even in APEC. So what we will do, and what they are suggesting in the book, as there is no H, there is only OH, so we neglect all of this part and take this as infinity, means just neglect it. And what they have done in the book is just do the calculation with this part. Now 3 multiplied by 10 to power minus 3 molar means 0.003. To make it
make it simplify for you guys. Whenever you see this kind of thing, make it simplify for you. So now we just this 2.303 is coming here, and we just are putting the value of concentration here, and we are getting the answer. That's it. This is the only question you can find in Monash University. Just remember the formula. Maybe in your question in KAPS there is very less chance of this happening, but maybe they give you the value of H. If they give you the value of H something, and they will also give you the value of Ka there, but I cannot show you any question like this because there is none in our books. तो ये अब पता लग गया आपको इस क्वेश्चन के बारे में कि इतना क्लियर नहीं है, तो ये आप याद जरूर कर लें फार्मूला अगर तो ये वैल्यूज आ गई। और ये क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू बफर कैपेसिटी। अगर ये वैल्यूज आ गई आपके पास के ए की और एच की, कोई अलग कंसंट्रेशन अलग होगी और ये दो वैल्यूज अलग होंगी, फिर आपको ये तीन वैल्यूज यहाँ पे चाहिए होंगी। के ए जो है ना ये कांस्टेंट होता है, वो बता के आपको देंगे कि के ए की वैल्यू ये है, जो भी वो दें। तो थर्ड आपके पास आएगी वैल्यू एच प्लस कितना है इसके अंदर। ये आपको अगर आ गया तो आप इसको करें, नहीं तो आप इसको छोड़ ही दें। ये क्लियर हो गया सबको कि ये क्वेश्चन किस तरह का दिया हुआ बुक में? जी सर, क्लियर। यस सर, क्लियर तो हो ये गया। मुझे भी इतना की आता था जितना कि मैंने आपको बता दिया, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ठीक है ना, और सेकंड मैंने पार्ट नहीं को हमें देखा वैसे किसी को निगलेक्ट कर देना है ना। हाँ, सेकंड पार्ट को निगलेक्ट कर देना अगर ये ओ एच वगैरह आपको दिया हुआ। अगर ओके। ओ एच दिया हुआ और ये बुक के अंदर एक ही क्वेश्चन है जिसमें ओ एच ही दिया हुआ। अच्छा जी, अब इससे ओवरऑल किसी का कोई क्वेश्चन हो इस सेशन के हवाले से? आपने स्टार्ट में एक बात करी थी, वो मैं सुन नहीं सकी थी, बस वो क्लियर कर दें कि डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड का फर्क बताया था कि सॉल्ट जो होता है वो अनडिसोसिएट वो होता है, क्या कहते हैं, डिसोसिएटेड होता है, और एसिड या बेस अनडिसोसिएटेड होता है। तो ये क्या बताया था, बस खाली वो बता दें टर्म मैं में। बता देता मैंने हूँ। उसका ये पता है किस तरह से है? ये जो किसी के एंड ये फार्मूला एसिटिक एसिड का CH3COOH में भी ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है एसिटिक एसिड। सही। अच्छा, ये जो है ना ये अनडिसोसिएटेड है क्योंकि ये एक फुल फार्मूला है। अनडिसोसिएटेड का मतलब होता है कि एक चीज एक ही रहेगी। ये एक फार्मूला है, ये अन शेयरिंग में नहीं है मतलब। इसलिए कहते हैं कि इसके दो हैं। तो हम ये समझते हैं कि सोल्यूशन में जाके इसमें दो में कन्वर्ट हो जाए। ये होता है डिसोसिएटेड, डिसोसिएट अच्छा। कर गया। तो इसलिए हम अच्छा, सॉल्ट को जो है वो ना जो सॉल्ट डिसोसिएट फॉर्म को नहीं कर डिसोसिएट। सकते वो जो होते हैं वो डिसोसिएटेड होते हैं, नहीं अनडिसोसिएटेड आपने होते हैं। इसकी मे भी डीपर साइंस हो सकती है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन इस तरह के क्वेश्चन में आपने देख लेना कि जो सॉल्ट है ना, ये जिसके साथ कोई चीज जी। अटैच है वो डिसोसिएट में आ जी। जाएगा, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। जो पूरा होगा फार्मूला, क्योंकि ये ऐसे ही होगा कि एसिटिक एसिड ही होगा और एसिटिक एसिड का ही सॉल्ट दिया होगा, ये कोई डिफरेंट नहीं होगा। यानी ये नहीं कि फाइजोस्टिग्माइन एक दे दें आपको और एक एसिटिक एसिड दे दें। ये ऐसी एक जैसी चीजें होंगी। जैसे हमने भी किया था एक और भी हमने फाइजोस्टिग्माइन का किया था, तो देखें यहाँ पे फाइजोस्टिग्माइन बेस लिखा हुआ है और फाइजोस्टिग्माइन ही सैलिसाइलेट में है। तो ये जो साथ अटैच है सही। ये सॉल्ट फॉर्म आ जाएगी इसकी। तो जो ओरिजिनल है उसको हम बेस या एसिड कह देंगे। सही। किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें जी, हम फिर इस सेशन को बस यहाँ पे क्लोज करते हैं और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। आपका होमवर्क ये है कि आपने इसी चैप्टर को कुछ और भी क्वेश्चन इसके अंदर हैं थोड़े थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट होंगे, आप मोनाश यूनिवर्सिटी के लेक्चर फाइल से ही इसको करें और फिर एपिक फाइल से करें। एपिक के अंदर भी ये थोड़े से क्वेश्चन है, इसके ज्यादा नहीं है। ठीक है जी, तो इस सेशन को हम खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज।